अनुराग, आपको क्या लगता है जो पायल रोहतगी का किस्सा हुआ है, कहीं पब्लिसिटी स्टंट है? मुझे नहीं मालूम पब्लिसिटी स्टंट है कि नहीं है. पायल रोहतगी इज अ काइंड ऑफ शी इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड पर्सन. शी प्रॉब्ली नीड्स हेल्प. दिबाकर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और आई कम्प्लीटली स्टैंड बाय दिबाकर. इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत होते रहते हैं इंडस्ट्री में और आई डोंट थिंक से इन चीज़ों किसी चीज़ को तवज्जो देना चाहिए. Dibakar Banerjee and how Payal Rohatgi is accused of sexual favor. No, there is no such thing as the casting couch, and I can vouch for Dibakar Banerjee. I don't see any controversy in there. I don't think he was accused of anything except the girl assumed anything. I'm saying if a woman is complaining about, oh, this director has been sleeping with me, then why would she have a problem saying that, showing her stomach? I'm saying there's a kind of a contradiction in there, and I completely stand by Dibakar. Hi everyone, welcome to this evening organized by Aangan Trust. An evening that I hope will give us all an insight into this population that is so on the fringes of the mainstream that we have forgotten that they exist. An evening that will engage us maybe in a debate that policy makers, psychologists, sociologists seem to have largely forgotten. Because I think most of us feel that crime is a matter for the police and maybe for us filmmakers, and that children in conflict with the law should just be put away and, safely where they can't do any harm. And actually that's what I thought. I mean, that was the extent to which I knew anything about this until Suparna invited me to be part of this event. And she gave me material and actually, read up, and I saw these films. And I see now with much more clarity how we all are connected so closely in this fabric of society, and that these children are so much a product of the very life and times that we live in, are a product of the society that we've created. And they are, after all, children and are our responsibility collectively. And also that, we must engage with these issues before juvenile offenders are soon adults, and then it may be too late to actually help them or remedy any of the situations that have given rise to their issues. So we must, I think, be involved. And now the good part, I actually got to see these lovely films that they've made, Jaan Shaan Imaan, and I think not just are they very well made films, thanks I think greatly to their mentor Pramod, but they were very moving for me because they are their stories, they are their experiences, and nothing can connect you more, I think, than this kind of insight that you get into their lives. So, well, I invite you to engage with these films, and I hope that this evening will go some way in helping us understand these children and their issues. Thanks. ये सब बच्चे जो हैं, they've come from families who are impoverished, who are within the poverty line. They're living in observation homes or they're working in observation homes. मतलब एक crime का एक है, उनकी family में है, खुद कर चुके हैं, and Aangan is trying to help them. Aangan is trying to help them get out of the entire thing. And this जो फिल्म बना चुके हैं लोग, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अपने आप को फिल्म पे डाल के मतलब देखना चाहते हैं कि हम लोग क्या बुरा किया था हम लोग ने और क्या कर सकते हैं हम इसके आगे. लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स. तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इन्होंने फिल्म बनाई है बाकी सब लोगों को दिखाने के लिए. तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी चीज़ है. एक्चुअली आप जब ये फिल्में देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे समाज में इतने किस्म के लोग हैं और ये बच्चे एक्चुअली हमारे समाज का इतना बड़ा अंग है, हमारे समाज का हिस्सा है और हम इन्हें भूल चुके हैं. और इन फिल्मों के दौरान हम देखते हैं उनकी कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी में क्या होता है. और मेरी समझ में ये बहुत ज़रूरी है, वो बहुत अहम है कि हम भी इन्हें समझें, अपने डिबेट में लाएं, अपने कॉन्शियसनेस में लाएं और हम सब
इनकी चर्चा करें, डिबेट करें इनके प्रॉब्लम्स के बारे में। पूरा जनरेशन है फिल्म मेकर्स का जो हमसे बहुत अच्छे हैं और हम लोगों के बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जो सारे नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, अगर आप देखें लास्ट ईयर की फिल्में और जो आने वाली फिल्में हैं, जो हमारे नए फिल्म मेकर्स हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा फेयरलेस हैं और हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। Idea is brilliant. I know Suparna for a long time and we watched her grow and I think this is brilliant because especially the idea of prevention. You can take the idea of say going to remand homes and correcting people there, but the idea of prevention is far better so that they don't go. So I think it's wonderful. So I mean I'm waiting for the films and I'd love to. I mean anything that I can do. ये बहुत ही रियल कहानियाँ हैं और इन बच्चों की जब आप कहानियाँ सुनेंगे देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये सब हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें हेल्प करें, इनको मेन स्ट्रीम में लाएं, हम इनको समाज का एक हिस्सा बनाएं इस तरह से कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके समाज में। हालांकि अब हम क्या कर रहे हैं कि इनको और भी फ्रिंज में डाल रहे हैं और भी निकाल रहे हैं और इससे क्या होगा कि कल जब ये एडल्ट्स बन जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे, ये क्रिमिनल्स बन जाएंगे और फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अनुराग, आपको क्या लगता है जो पायल रोहतगी का किस्सा हुआ है, कहीं पब्लिसिटी स्टंट है? मुझे नहीं मालूम पब्लिसिटी स्टंट है कि नहीं है। पायल रोहतगी इज़ अ काइंड ऑफ शी इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड पर्सन, शी प्रॉब्ली नीड्स हेल्प। दिबाकर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और आई कम्प्लीटली स्टैंड बाय दिबाकर। इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत होते रहते हैं इंडस्ट्री में और आई डोंट थिंक से इन किसी चीज़ को तवज्जो देना चाहिए। और हैं बहुत सारे, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मेरे को 50 मैसेज दिन में ऐसे आते हैं लोगों के और हम लोग सारे इसलिए वाई डू थिंक टुडे देयर इज अ होल लॉट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स who are doing casting for films and directors have stopped meeting actors precisely for this reason. There was this news on Dibakar Banerjee and how Payal Rohatgi is accused of sexual rape. What's your take? I know there is no such thing as the casting couch. All the younger directors making films today who are valid, and the industry has changed. So everybody who's valid is kind of under 40 now. Whether you take Raju Hirani or you take Karan Johar, you take Farhan Akhtar, you take Shekhar Kapoor, take Ketan Mehta, you take Yash Chopra, you take anybody here, anybody, Anurag, Vishal, it does not exist. And I can vouch for Dibakar Banerjee. No director worth his salt is ever going to cast somebody for the wrong reasons. Tomorrow he has to face the audience. It doesn't work, he looks like a fool. सुधीर जी, आपको क्या लगता है एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट है? मैं नहीं जानता कोई किस लिए कर रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो कास्टिंग काउच लफ्ज़ है ये एग्जिस्ट करता नहीं है। मुंबई में मैंने नहीं देखा। जितने भी आज के फिल्म डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं और कई लड़कियां हैं, तो कोई ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। Casting couch or any kind of a couch, it exists everywhere, you know. Why casting couch? There's a casting back seat of the car, there's a casting scooter, there's casting anything. I'm saying it entirely depends on from person to person. I think there's a lot of filmmakers today, all of us, there's so much integrity. I don't think Dibakar or Basu or Imtiaz or me or anyone would give a role to anyone just because somebody is sleeping with them. I don't think so. We all audition, we all have casting directors, we all have our, like there is Mukesh Chabra who does casting for me, there is somebody who does casting for somebody else. I think Dibakar also has a casting director, and I think because of all these things that have been happening, most of us directors have stopped meeting actors in the first place.